visible? Yes, sir. Okay. So we will start with the PLC multiplication. By the way, you got your sessional schedule. It is from 18th. So for final year it is offline, but for you guys it is online still. So that's I do not know it is good or bad, but yes, some relax is there, so you can. Yeah. So in multiplication, again we have similar procedures. So we have these two power lines, and then I have a rung. Along these power lines, I have a rung. So, and 0612. Operand 1, holding register address 0037. Then I have operand 2, again holding register uh, or input register, you can say 0081. This could be a constant, maybe a constant, and then I have a destination register, again holding register 0068. So basically this destination register, I'll explain this in a while. Let me draw. This is MP0207. Now here, if you see, I have operand 1 in register HR0037, operand 2 in IR0081. Both is to be multiplied, right? So this operand 2 could be a register value, I mean the value taken from the register, or it could be from uh, uh, a constant value. I can put a constant value instead of putting the value in register. I can put a constant value there, some constant, and that will get multiplied. So when the function is enabled, enable means this contactor will close. The moment it will get closed, then this multiplying action will be enabled, and the multiplication will get started. Okay. So here, after the multiplication, the result will be stored here. HR0068 is mentioned here, but it is a 8-bit register. Our result may be a 16-bit. So here it is written one register, but it will have two registers, 68 and HR0069. Two 8-bit registers will be used to store the destination, which will be 16-bit most likely, and that is why the 16-bit register is used. 16-bit, how it is made? Two 8-bit registers are taken for destination, although in the ladder diagram one register address is mentioned, but it is understood that next register address is clubbed with it. Right. So that is how the operation is performed. Now here, in the case of this coil,
whose address is shown as MP0207. So in the case of addition and subtraction, we saw that it is because of overflow or because of negative number. This coil was giving some indication, but here that is not the case. In multiplication, that is not needed, and that is not the case. So whatever be the result, once the operation is done, this will close. अब आपका काम हो गया. तो इसका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंट ऑन ऑफ का कोई नहीं है एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, बट यहाँ पर ये क्वाइल है, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा इट विल टर्न ऑन. राइट. So then I have ये तो हो गया block format में. Similarly, I have coil format. I can write this in coil format as well. So for multiplication action, the coil format would be, I have 1 to 1, that's the contactor. Then I have one number here, 121 030, and then G, zero three one 486, and then I have multiplying action 058, 03 is 2 is the address, and then I have multiplying 806, that is 033 address. This is coil format. Okay. So what is to be done? इस लोकेशन पे ये नंबर, जैसे हमने पहले कॉइल फॉर्मेट में लिखा था, दैट this these two numbers have to be multiplied. So अगर आप 121 and 486 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आपको दो जगह पे डेटा स्टोर करना पड़ेगा. When you multiply these two numbers, you will get 058806. Then 8 bit यहाँ पे स्टोर होगा, 8 bit यहाँ पे स्टोर होगा. That is the multiplication. That is the meaning. Okay, this is a block diagram. Right. So this is how it is shown in coil format. अगर आप सब्सट्रैक्शन एडिशन वाला coil format देखें तो दिस 30 50 यानी ये नंबर में से ये नंबर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो ये 34 यहाँ पर स्टोर हो गया. सिमिलरली इफ यू सी दिस इनटू दिस, जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला 8 बिट यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट 8 बिट यहाँ पर आएगा. सो द रिजल्ट विल बी 16 bit. Now if you do not have result in 16 bit, you have 8 bit result, then only one block, only one will come here. Only this will come, or 32 or 33, any wherever you are storing. Since two crosses are coming, it shows that the result is a 16-bit number. It is not a 8-bit number. Okay. So that is the meaning. Okay. Then I can have further operations, which can be done. So many runs I can write and it can be done. So this is clear? Very simple. Any doubt to anyone?
No, sir. Okay. No, sir. Similarly, we can go for division. PLC division. So again, this can be represented in two forms: uh, block format and coil format. If I write this in, let's say, block format, so this is block format. So I have a enable switch here, which is a contactor, that is IN0194, which is enabled. Then I have operand 1, which is having some address, let's say holding register 003. Then I have operand 2, which is again HR0061. It could be anything, I guess you can, you know, and I have destination, which is output register 0013. This could be a constant. Now again here also this is the same funda. I have shown address of one register which is 8 bit, but it could be of 16 bit. So the next address I cannot put operand 2 on 833 HR0034. I will leave it HR0034 so that whenever is needed, that can be accommodated by operand 1 if the data is 16 bit long. So I have division 0119. So this is how it is. Again, same is here. The destination also, it is shown here that it is a one register address of 8 bit, but 0014, that is next after this register, is also blocked for the result of this division operation. So that is how it is, you know. So let us do one example. So how it works. So I have, operand 1. This is 16 bit value in two registers. So this, let's say I have 648127. Okay. Operand 2, which I assume a constant value. Let's say this is 2421. So how much I'll get? अब आप 2421 से इसको divide करेंगे. So what you'll get if you divide these two, then use your calculator. So I'll be dividing 648,127 divided by 2421. This comes out to be 267.7104. Okay.
So what is the integer value? 267. अब आप आइए, तो अब आप रिवर्स प्रोसेस करें। सो 267 को अगर 2421 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 267 multiplied by 2421. So I get 646407. ओके, देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा 267.7104 आ गया। बट इफ आई टेक द इंटीजर नंबर, देन दिस इंटीजर नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा इतना आ रहा है। नाउ दिस इज नॉट सेम एज दिस नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर इज अ डिफरेंस। हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो आपका पोर्शन आ रहा है ये रिमाइंडर हमें चाहिए। तो द रिमाइंडर विल बी 648127 minus 646407. This comes out to be 1720. So what will be your destination? जो डेस्टिनेशन आप लिखेंगे यहाँ पर, दिस डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में ये 2 रजिस्टर्स पे आएगा। इन इट विल कम इन 2 रजिस्टर्स। फर्स्ट रजिस्टर में व्हाट इट विल कम, दिस वैल्यू 0267, एंड सेकेंड रजिस्टर में क्या आएगा? सेकेंड रजिस्टर में आएगा रिमाइंडर 1720। दिस विल कम हियर। दिस इज योर डेस्टिनेशन। रिमेंबर, 0.7104 नहीं आया यहाँ पर, दिस विल नॉट कम हियर। यहाँ पर 0.7104 नहीं आया है। क्या आया है? जो आपका इंटीजर वैल्यू है, दैट इंटीजर वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो रिमाइंडर आएगा। तो दिस इज रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर विल कम इन द नेक्स्ट 8 बिट रजिस्टर, एंड द फर्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन आया है जब आपने डिवाइड किया है, दैट विल कम। दिस इज हाउ it works. Right? Is this clear? Yes, sir. Okay. So this was in block diagram. Now we will show it in coil format. So in coil format, I have again a contactor. Then I have a coil. And again I have a coil. Then again I have division now, 32. Then again division, 33. So 05 is address 121. So here I have 891 and 26. अब आप देखिए 891 डिवाइडेड बाय 26 कितना आया? 34.2692। तो यहाँ पर आ जाएगा 34। सो दिस कम्स आउट टू बी, यानी 891 डिवाइडेड बाय 26, so this comes out to be 34.269. So ये 34 जो इंटीजर वैल्यू है, this comes here. Now you multiply 34 by 26. 34 by 26. So 34 multiplied by 26. This comes out to be 884. Now the difference will be 891 minus 884.
891, 884. These of 7. Okay. Yeah. ठीक है जी. This simple as this. So किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ सर. No, sir. Okay. This is very straightforward. अगर आपको concept clear है तो आप you can move along. Now coming to the next topic, let's come to the syllabus where we are now. I have not trigonometry and log functions. इस हफ्ते I'll try to complete this unit because next हफ्ते I don't think सेकेंड सेशन के बाद हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा टू स्टडी. मोस्ट लाइकली ईद के तुरंत बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाना चाहिए आपका. PLC trigonometric and log function. So I have certain symbols and then PLC knows that क्या representation and that we will see. I'll be having functions, then I'll be symbol, then I'll be having source, then I'll be having destination. So I have function, symbol, source, then I have destination. So I have arc, cosine. Arc cosine आप लोगों ने पढ़ा है क्यों भाई? The cosine inverse. हैं? Cosine inverse. Cosine inverse, yes, correct. Then I have arc sine. इसका symbol होगा ASN. This is source is sine. Then arc tangent. इसका symbol है ATN. Again the source जो है वो होगा tangent. Then I have cosine. Cosine में I have cos and this is degrees. Then I have sine. Our symbol is sine. Again degrees. Then I have
tangent, our symbol is tan, again degrees. Then I have command convert radians to degrees. I have deg. This is radians. Then the next operation is convert degrees to radian, that is RAD. So degree source resistance. Then natural log ln. Okay, this will be some number plus number. Then log 10, sorry, log to base 10. This symbol will be log. This will be a plus number. Okay. This is how it is shown. Now, since we are studying this, we will write some more function like other PLC arithmetic functions. में क्या symbol होता है that we will write. So other PLC arithmetic function. I have function symbol source, then I have destination. So if I have to compute using a formula, हमें कोई फार्मूला लगा के कंप्यूट करना है, तो उस केस में क्या सिंबल हम देंगे? पीपीटी सोर्स क्या होगा? ए फार्मूला, और डेस्टिनेशन क्या होगा? द आंसर. अब आइए सेकंड, एवरेज ए फाइल. Average a file, that is AVE, a series of numbers, and destination will be the average. So average अगर निकालना है AVE, then अगर किसी नंबर का नेगेटिव करना है, so what you will write is NEG, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, और आउटपुट होगा माइनस और प्लस. अगर माइनस है तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. इफ यू डू ए नेगेटिव ऑफ एनी नंबर. देन एक और स्टैटिस्टिक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड
डेविएशन, ये अक्सर निकाला जाता है। सो इट इज एसटीडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता होगा स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, series of numbers, then value of standard deviation. And the last one is, get some lights. Last one is x to the power of y, that is x py, that is x and y values, that is the answer. तो अगर ये कमांड्स आपको परफॉर्म करना है, then you have to use these terms in PLC programming. Okay. Is this clear? इसमें कोई डाउट? सीपीटी जो फंक्शन है, दिस सीपीटी इज वेरी यूजफुल. सो मिसाल के तौर पर अगर आप सीपीटी में आपको लिखना चाह रहा है, आप करना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू टाइम सी माइनस स्क्वायर रूट डी, फर्स्ट कर लीजिए. तो दैट यू कैन एंटर इन सीपीटी. इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग नंबर अर्थमेटिक प्रोग्राम ओनली वन फंक्शन. आप सीपीटी में जाके इसको डिफाइन कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा. तो उसी तरीके से सीपीटी में, जैसे आपने सीपीटी में कुछ लाइब्रेरी में जाके आपने डिफाइन कर दिया, मिसाल के तौर पर आपने डिफाइन कर दिया कॉपी. कॉपी का मतलब ये है कि कॉपी फ्रॉम ए टू बी. अब आप ए और बी में कुछ भी लिखिए, और जैसे ये कमांड आप कॉपी लिखेंगे सीपीटी में, यू नो योर वर्क विल बी डन, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके. तो that is how you know the meaning of CPT. CPT is made to make things easy. Just a one command, one command, expression, right? तो फिर इसका हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे मे बी टुमारो. If you have any doubt, you are welcome to ask. किसी को कोई डाउट? No, sir. Is this clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज तो आप लोगों को ये बताना था कि 18 तारीख से आप लोगों का सेशनल्स हैं, और ये यूनिट 4 यूनिट मोस्ट लाइकली बाय थर्सडे ये ख़त्म हो जाएगी. ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. तो सेशनल 2 का जो सिलेबस होगा वो यूनिट 3 एंड 4 होगा. यूनिट 3 हम पढ़ चुके हैं, और यूनिट 4. So unit 3 and unit 4 will be the syllabus for sessional 2.
Let me check the attendance.